Hey guys, this is Naqi Khan and today we will analyze the poem Love's Philosophy by B.Shelley Shelley, whose full name is Percy Bysshe Shelley, lived from 1792 to 1822. He is one of the greatest romantic poets like Wordsworth, Coleridge and Byron. He was an idealist and an atheist. Love's philosophy is in fact a theory presented in logical arguments. The title of the poem suggests that it will reveal truth about love. Love is personified here as divine power. So without any hesitation, let's start the line by line analysis of the poem Love's Philosophy. So guys, this is a simple lyrical poem of a speaker longing for his lover. It was published in 1819. The rhyme scheme of the poem is AB AB CD CD. So let's start the poem. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with the sweet emotion. Nothing in the world is single, all things by a law divine, in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth, if thou kiss not me? Here guys, you can see that a philosophy is used by the poet. That is, all of nature is connected. So why can't we? ये पूरी नज्म इसी फिलॉसफी पर लिखी गई है कि नेचर की हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, रिलेशन में है. सो हम क्यों एक नहीं हैं या क्यों रिलेशन में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है. In fact, Shelley believed that nature could teach us and improve human interaction. He says that मिलना, इंटरकनेक्ट होना ये इस दुनिया का कानून है एंड हमें भी इस असूल को, इस कानून को ओबे करना होगा. Natural imagery is used to prove that poet should be with his lover. Mean imagery of nature यूज़ की गई है जिसके ज़रिए पोइट ये साबित करता है कि उसे और उसकी लवर को साथ साथ होना चाहिए. इस पोइम लव्स फिलॉसफी में भी नेचुरल इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है. So let's start the very first stanza of the poem. The fountains mingle with the river. Fountain means फुआरे, बट जहाँ पर you might say that आबशारे या झरने mingle मिक्स होते हैं, मिलते हैं with the river दरिया से. झरने दरिया से मिलते हैं, दरिया से जा मिलते हैं. And rivers with the ocean, और दरिया समंदरों के साथ. The winds of heaven mix forever. जन्नत की हवाएं हमेशा मिलती रहती हैं. With a sweet emotion, एक मीठे एहसास के साथ. Nothing in the world is single. दुनिया में कोई भी अकेला या तन्हा नहीं है. All things by a law divine. तमाम चीज़ें एक खुदाई कानून की जानिब से. In one spirit meet and mingle. एक जज्बे में मिलती और मिक्सअप होती हैं. मीन ये कानून, ये असूल जो बना दिया गया है, ये एक डिवाइन पावर है, अटल हकीकत है और सबको इसे फॉलो करना पड़ता है. Why not I with thine? तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं मिल सकता हूँ तुमसे? क्यों जुड़ नहीं सकता? एक नहीं हो सकता. So you can see that in this stanza that speaker is using religious imagery to strengthen his arguments. He speaks of heaven and divine law. He also uses natural imagery by speaking of river, oceans and the world. One may say that he is trying to seduce his lover. In the second stanza, see the mountains kiss high heaven.
पहाड़ों को जन्नत के बोसे लेते हुए देखो। मीन्स पहाड़ों की ऊंचाई से ज़्यादा है। दैट्स वाई पोइट इस बात को भी एज एन आर्गूमेंट यूज़ कर रहा है कि वो यानी पहाड़ जन्नत को, हेवन को किस करते हैं। एंड द वेव्स क्लैस्प वन अदर, और लहरें एक दूसरे से गले मिलती हैं। नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन, किसी भी सिस्टर फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को माफ़ नहीं किया जाएगा। इफ़ इट डिसडेन्ड इट्स ब्रदर, अगर इसने मेल फ्लावर को ठुकराया, डिसडेन मीन डिसलाइक किया, अगर किसी भी फीमेल फ्लावर ने मेल फ्लावर को इग्नोर किया, डिसलाइक किया या रिजेक्ट किया तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। एंड द सनलाइट क्लैस्प्स द अर्थ, और सूरज की रोशनी ज़मीन को गले लगाती है। एंड द मूनबीन्स किस द सी, और चांद की रोशनी समंदरों के बोसे लेती है, समंदरों की सतह को चूमती है। What is all this sweet work worth? इन तमाम मीठे खूबसूरत कामों या चीज़ों की क्या कीमत है। If thou kiss not me, अगर तुम मुझे किस नहीं करती। मीन ये सारी चीज़ें, इनकी खूबसूरती, इनका मिलना, ये सब बेकीमत हैं अगर तुम मुझे किस ना करो तो। So guys, first of all, you must know that verbs in this poem are personified. Mingle, mix, meet, kiss, clasp, all highlight that sexual and physical interconnections. Then there is no use of full stop in the poem, shows that love doesn't stop. प्यार कभी नहीं रुकता। Semicolons between sentences and a dash is used in each stanza to signal interruption to the poem's flow. मीन पोइम की नज़्म की रवानी तोड़ने या उसमें खलल डालने के लिए सेमिकोलन्स और डैश यूज़ की गई है। Then each stanza ends with a question seeking a response from the lover. So guys, ये एक छोटी सी लिरिकल पोइम है जिसमें पी.बी. शैले ने नेचर में चीज़ों के मिलने और एक होने के इशारे देकर अपने बिलवर्ड से क्वेश्चन किया है कि क्यों हम इस तरह मिल नहीं सकते, क्या इस सब का क्या फ़ायदा है अगर तुम मुझे किस न करो। Perhaps a question raised from the whole poem is what might stop a lover from responding. Are they already married? And the answer is yes, they are.